Good morning students. Today we are going to discuss about electronic configuration of atom. Students, आज हम बात करेंगे कि कैसे atoms की electronic configuration की जाती है. Okay? Students, yesterday video was not delivered as video was made long. So today I am making the new one. So let us begin. Students, टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें सो इट इज़ बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम. ओके, मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें, इसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल्स में. ठीक है, and the electronic configuration of different atom can be represented as, हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं एटम्स में इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का या एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हम बेसिकली दो नोटेशंस यूज़ करते हैं. ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर देम. स्टूडेंट्स, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम उसके लिए दो नोटेशंस यूज़ करते हैं उस एटम के लिए. सो लेट अस सी व्हाट आर दैट. टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट, अगर पहला नोटेशन हम देखें सो यू कैन सी हियर इट इज़ एस ए पी बी डी सी. ओके, बेसिकली स्टूडेंट्स द नोटेशंस लाइक एस पी एंड डी इट रिप्रेजेंट्स द सबशेल. अगर हम एस पी और डी नोटेशन की बात करें तो ये सबशेल्स को बताता है कि एस सबशेल है या पी सबशेल है या डी सबशेल है. एंड स्टूडेंट्स द सुपर स्क्रिप्ट हियर यू कैन सी द ए बी एंड सी टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो सुपर स्क्रिप्ट है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है कि उस एस सबशेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, पी सबशेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, डी एंड शो ऑन. ओके, सो स्टूडेंट्स लेट अस सी और अंडरस्टैंड दिस विथ एग्जाम्पल. हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज स्टूडेंट्स वी आर कंसिडरिंग अ एटम हाइड्रोजन. ओके स्टूडेंट्स, सपोज करिए हम लोग एक एटम कंसिडर कर रहे हैं जो कि है हाइड्रोजन. सो फॉर हाइड्रोजन हाउ वी विल राइट. स्टूडेंट्स, one more thing is there, you have to also look for the filling principles, that is the above principle, the Hund's rule and the Pauli exclusion principle. Students, हमें तीनों principles को भी ध्यान में रखना है. For talking about above principle, तो we have to pay attention that the filling of electron starts from the lower level. Okay, lower energy level, मतलब जो electrons के filling होगी वो lower energy level से होगी. That is, as hydrogen has one electron, हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है. सो फॉर द फिलिंग ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, फॉर दिस वी विल राइट 1s. ओके, बिकॉज दिस हैज़ द लोवेस्ट एनर्जी. इसके पास क्या है, लोवेस्ट एनर्जी है. ओके, नाउ गिविंग द नोटेशन वी कैन राइट 1s1 and 1s1 configuration it will represent hydrogen atom. Okay, now students you can also see this with another example. Suppose we are taking helium atom. अगर हम helium atom लेते हैं so we are very known with the fact that helium has 2 electron. हम ये बात जानते हैं कि helium के पास 2 electrons हैं. So students, for this what you have to do is you have to write 1s2. Okay, this will be the electronic configuration for helium atom and the trend goes on. Students, let us see one more method or one more notation. Here is the second notation. Here what happens, we make the orbitals. Okay, suppose there is s orbital, so for this we will keep one orbital. For p it will be 3 orbitals and for d it will be 5 orbitals. Okay, and we will fill electrons in them. Students, the consequence or basic importance of this method is that it also represent about the quantum numbers. Okay, it also represents about the quantum number. So students, you can see here हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स बनाते हैं. s है
So for this there is 1 orbital p here, for this there is 3 orbitals, and d there is 5 orbitals, and for f there is 7 orbitals. ओके एंड स्टूडेंट्स हम सिंपली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिल करके दिखाएंगे. सो अगेन सपोज वी आर टेकिंग हाइड्रोजन. सो फॉर हाइड्रोजन एज देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन, so we will write it as this, and here we will write 1s. okay, again students suppose we are writing for helium. अगर हम helium के लिए लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, we will write the s orbital and we will represent the 2 electrons. okay, and representing the second electron you have to follow the Pauli exclusion principles and Horn's rule. दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कराने के लिए हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हॉर्न्स रूल को ध्यान में रखना है. ओके, सो इन दिस मैनर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस इज गिवन. ओके, दैट इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्टूडेंट्स, दिस मेथड इज यूज्ड बिकॉज हियर in this method the quantum numbers are also represented. okay, that is if you are taking the upward arrow, so it says the positive, and this arrow it says the negative signs. okay, these are simply representing the positive spin and the negative spin. Positive spin, that is clockwise direction, and negative spin, that is anti-clockwise direction. okay, now students, if you will look for any question, suppose there is a question that give the electronic configuration of sodium or give the electronic configuration of carbon. So for this what you have to do is, suppose you have to give the electronic configuration of carbon. आपको कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देनी है. So for this the necessary conditions which you require is you must know about the electronic configuration, which is basically atomic number of carbon. आपको इसके लिए कार्बन का atomic number जानना ज़रूरी है. So students, for this we all know that carbon has 6 electrons, 6 atomic number of carbon is 6. So for this the distribution we have to follow the Abbo principle, that is we have to fill the electron in from the lower energy states. okay, so for this the energy states will be 1s, then 2s, then 2p. okay, so suppose you are going to give the first notation, so you have to write 1s2, 2s2. so as 4 electrons are done, now you are going to give the 2 electron in the p orbital. okay, how we are driving this, because we are doing this as s has maximum capacity of 2 electron, again s has maximum capacity of 2 electron, and p has maximum capacity of 6 electron. And suppose we are going to give the orbital notation, then also in orbital notation we will do it in this manner. okay, and we will represent the electrons as, here there are 2 electrons, here there are 2 electrons, and in the case of p we will follow the Horn's rule and Pauli exclusion principle, that is we will firstly make it. okay, so now students, let us see some examples. So here you can see there are some examples, and basically you have to look for the atoms, okay, where star symbol is there, that is in these atoms there is exception, and this exception basically governs about the fully filled and half filled orbitals stability. So let us see clearly about them. Students, in case of chromium, if you will see chromium has 24 electrons. ठीक है, atomic number of chromium is 24, and filling the orbital you will see that the outermost orbital, okay, that is in the case of 3d and 4s, starting orbitals will be as such. So for you can say chromium, the core will be of argon. So you can write like this as argon. It will represent 18 electron. Argon will represent 18 electron, and after argon what you have to write is, you have to write after argon, that is argon is having 1s2, 2s2, 2p6, that is 6 to 8 to 10, and after this you have to write 3s2 and 3p. okay, now
after argon that is having 18 electrons. So you can see in the trend here, look here, for argon it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, this one is for argon. ये जो कन्फिगरेशन है ये आर्गन के लिए, आप यहाँ देख सकते हैं ये कन्फिगरेशन किसकी है, आर्गन की. ओनली लुक एट दिस कन्फिगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, so after 3p6 you have to write the configuration of chromium, that is argon 3d and 4s. So students, for argon that is 3d, you are known with the fact that d orbitals contains 10 electron and s orbital contains 2 electron. Okay, but the case is not so in case of chromium. There is exception, and what is the exception? You can see here students, in case of d there will be 5 electrons and for s there will be 1 electron, because d5 configuration is more stable and 4s1 is also stable. So this will be the exception for the case of chromium. ये क्या होगा, chromium के केस में exception होगा, क्योंकि d5 हम configuration इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है in comparison to other orbitals. Okay, practically here the notation should be 3d4 and 4s2. यहाँ पे notation होना चाहिए था 3d4 and 4s2, but the notation is 3d5 and 4s1. The similar will be the case for other exceptions like copper. Copper is having 29 electron, copper के पास 29 electrons है, और यहाँ पे भी students हम क्या देखेंगे 3d9 होना चाहिए था, लेकिन there is 3d10 and 4s1. So in this manner you have to see the important, that is exceptions, and in your exam the exception questions will be asked, that is it may be asked that give the electronic configuration of copper or give the electronic configuration of chromium and so on. So this is all about today's lecture. I have sent the 2 pages here. Here are the electronic configuration of atoms like copper, like barium, like lanthanum. Every atom is there, and so you have to practice for them. Thank you class.